Hello there. Welcome to part 2 of day 3 in Bangalore and welcome to Bannerghatta National Park. Zoo के अंदर जाने से पहले we treated ourselves with some sweet corn, bale and hummus. Without wasting any of your time, I will start directly with the animals at this zoo. Yo, masa yo wait. Balu ನೀಡ್ಲೋ. जू के बीच में यहाँ पे आपको बोटिंग करने के लिए भी ऑप्शन है. इसकी टिकट्स लेकिन आपको सेपरेटली लेनी पड़ेगी. वी डिड नॉट डू इट एज वी वर नॉट क्वाइट फैसिनेटेड विद द बोटिंग एरिया टू बी ऑनेस्ट विद यू, सो वी स्किप्ड ऑन इट. Back to the zoo with lazy hippobacks. अभी तक हमारा सिर्फ हाफ ही जू देख के हो चुका है.
These long trees are really fascinating to look at. So it's 5:10 now and it took us about 1 hour to check out the whole zoo. And with the zoo done, we are heading back to our scooters. About the zoo, overall, it's a huge place and there is a lot to see here. But I will tell you how I felt in some time on the scooter. While heading out, you can again have some quick snacks like we had earlier. Okay, तो अभी टाइम हो चुका है 5:37 and we are leaving from the स्लैश सेंचुरी. वहाँ पे शुगरकेन जूस लेने के लिए रुके हैं मयूरेश और साइज. I don't want it right now. And zoo was, I mean the century ride was good, it was fun. Zoo was okay, it wasn't that great. मतलब I don't know, मेरे को तो बुरा लगता है to see so many animals in a small cage and they're just roaming round and round. So personal opinion I guess, but फिर भी. And right now plan is to go and give one of these rental bikes back to the shop because कल सिर्फ एक ही हमें बाइक चाहिए क्योंकि साइश को कल काम है, तो दूसरी बाइक रख के कुछ फ़ायदा नहीं है. And yeah, after that, after giving the bike at the rental shop, it's at लाल बाग. तो उधर देने के बाद हम लोग मेट्रो लेंगे एंड वी विल गो टू MG रोड. और उससे बाद आई विल कीप यू गाइज अपडेटेड. वाइल राइडिंग आई वोंट बी एबल टू रिकॉर्ड, इसलिए डायरेक्ट मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे. ओ या बिफोर आई फॉरगेट, आपके जो बाइक या कार की आप टिकट फाड़ते हो जब अंदर जाते हो फॉर फीस, पार्किंग फ़ीस, वो ध्यान से रखना बिकॉज वाइल गोइंग आउट दे आस्क फॉर द टिकट. So yeah. Before dropping off the rental bike, we stopped at Decathlon. Decathlon हो गया अभी लास्ट स्टॉप फॉर नाउ. नेक्स्ट स्टॉप इज़ द बाइक रेंटल प्लेस, सो सी यू देयर. Near Lal Bagh somewhere, we found this place on the way and it looked nice, so we just stopped to have a closer look at it. Returning the silver bike today, which was with me for 2 days. Good memories, 300 plus something I think ride. Close to 300, I won't say 300 plus, close to 300 ride. तो आज रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ से ली थी. And yeah. As said earlier, we returned one of the Activa and kept one Activa at the shop, and all of us headed to MG Road with the help of metro. Platform 1.
Welcome to MG Road, and that right there behind us is the metro station. So we wrapped up early at MG Road because we wanted to take the metro to go back to the scooter, and Saish had to take the metro to go home. And we were told that the last metro was at 10:45. तो आज के दिन का हमारा लास्ट स्टॉप विच वॉज महात्मा गांधी स्ट्रीट MG स्ट्रीट इज़ डन। मेट्रो से हम लोग इधर लाल बाग आए और now we are going to pick the one Activa which we have kept for tomorrow, or tomorrow would be fun as we are going to an amusement park. You might have guessed it already which one, but बने रहिए कल के लिए. And yeah, I'll see you on the bike. I'll probably give him to ride and I'll sit behind. Streets of Bangalore are pretty much empty at 10:30, quarter to 11. In 400 meters, turn left onto 14th Cross Road. Finally made it home. The time is 11:25. अभी सिर्फ नहा धो के थोड़ा पानी पी के सो जाएंगे and we'll get ready for tomorrow. इधर तक वीडियो देखने के बाद लाइक का बटन दब जाना चाहिए. बने रहिए फॉर डे 4 इन बैंगलोर ट्रैवल सीरीज, and thank you so much for watching, subscribing and sharing my videos. See you in the next one. Take care and peace. So please subscribe, whatever.